Praveen. Today's topic is reaction with water. Metal react with water and displace hydrogen from water to form metal hydroxide, metal oxide, and hydrogen gas. Some metal react with cold water, some with hot water, and some other with steam. एक एक्टिविटी है जिसके कारण हम टू शो दैट ए मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। सबसे पहले क्या ज़रूरत होगी? थिंग्स नीडेड: अ सोडियम मेटल, अ फिल्टर पेपर, 250 ml का बीकर, अ नाइफ, ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर एंड वाटर। सबसे मेथड: कट अ स्मॉल पीसेस ऑफ सोडियम with the help of a knife and remove the kerosene by uh, pressing the piece between the fold of a filter paper. Take a 250 ml beaker, fill 3/4 of it with water. Now put the pieces of sodium into the beaker. अब हम क्या देखते हैं ऑब्जर्वेशंस में? द सोडियम मेटल फ्लोट्स ऑन ए सरफेस ऑफ वाटर, तैरता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। एंड एट द बेस एट द सेम टाइम मेटल to form a silvery white ball. The silvery white ball of sodium darts over the surface of water with a sound, produces tiny bubbles of hydrogen gas. The silver white balls gradually become smaller in size and catch fire. It burns with a golden yellow flame. The sodium become hot. This is because the heat evolved in the reaction metal, the sodium metal and the hydrogen gas produced during reaction catches fire. After this reaction, if this solution is tested with blue and red litmus paper, the red litmus paper turn blue. This show that the solution is basic in nature. The chemical equation में आप देखेंगे सोडियम प्लस वाटर is equal to sodium hydroxide plus hydrogen gas plus heat. Conclusion हुआ when a metal react with water, hydrogen gas is formed. Similarly, potassium react with cold water to produce potassium hydroxide and hydrogen gas. ऐसे ही magnesium react with hot boiling water to form magnesium oxide and hydrogen. Zinc react with rapidly only with a stream to form zinc oxide and hydrogen gas. Non-metals do not react with water. Yes, stream. Metals such as gold, silver, and platinum are quite unreactive and lit at the bottom of reactivity series. Due to this property, they are used in a making ornament, decorative item, and coins. Platinum is used to making alloy, electrical grades, and international standard of weights and measurements. अब हम बात करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज या फिर कहते हैं एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा। सबसे पहले मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, सबसे पहले मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं आपके, फिर केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस हो जाएगा और सबसे नीचे लेस्ट रिएक्टिव मेटल। इन एनी reaction a metal can be replace another metal if it is a placed above the other metal in the reactive series, but it cannot be replace a metal which is a placed above this in this series. For example ये देखिए, जैसे जिंक है Zn, ही ले लीजिए जिंक is placed above copper, so it can replace copper from copper sulfate,
मोस्ट रिएक्टिव सीरीज ऊपर है आपका पोटेशियम, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, ये सब मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं। लेस रिएक्टिव मेटल्स नीचे हैं, देखेंगे आप, गोल्ड है, प्लेटिनम, ये सब क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड लेस रिएक्टिव मेटल, chemical reactivity of metals decreases।